हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं Django and if you see this is my channel called Engineering YouTuber and I welcome you all. This is the first video of introduction in Django. You can watch that video in I recommend you can watch that video in the speed of 1.25x, so it will be a little slow at the starting, but it is necessary to cover all theoretical part. So actually I covered almost 75% of a theoretical about introduction, how we uh, why what is the benefit of using a Django, where we use the Django, and why we need a Django as a framework. So uh, go and watch this first video, and now this is the second class on Django, and what we're gonna learn in this video is like how to install a Django. So this is a more like video on uh, let me just write it down here. The Django installation, installation, and create first application in Django. Okay, सो ये चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. ओके, इंस्टॉलेशन एंड क्रिएटिंग द फर्स्ट एप्लीकेशन इन Django. So first, how to install a Django. This is the first thing we are gonna cover here. How to install a Django. So how to install a Django, ये किसी कैसे करना है, तो जस्ट गो ऑन Django. इस Django का ये ऑफिशियल वेबसाइट है. यहाँ पे जाके आपको हर एक चीज़ मिलेगी. लेटेस्ट न्यूज़ है Django का वर्जन 5 आ चुका है. सो विथ न्यू अपडेट एडवांस टेक्नोलॉजी इन द Django फ्रेमवर्क, तो आप जाके वो भी देख सकते हो. इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव ओवर हियर. ऑल द थिंग्स यू कैन गो एंड वॉच हियर. बट इफ यू वांट टू इंस्टॉल अ Django, तो उसके लिए हम जैसे पिप इंस्टॉल Django, बस जैसे पिप इंस्टॉल किसी भी पाइथन लाइब्रेरी का इंस्टॉल करना, तो हम पिप इंस्टॉल लिखते हैं. वो क्या पैकेज है एक पाइथन लाइब्रेरी का. उसमें सब जो कुछ मटेरियल है वो वहाँ पे किया गया है, लाइक उसके बारे में लिखा गया है, लाइक उस लाइब्रेरी के बारे में. तो उसी तरह से ये पैकेज है Django का, जो कि पाइथन के आईडीए पे हम इंस्टॉल कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं. अब आईडी क्या होता है? आईडी यानी हर एक प्लेटफॉर्म होता है. जावा यूज़ करना है तो उसका एक प्लेटफॉर्म अलग है. कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसका प्लेटफॉर्म अलग है. उसी तरह से पाइथन यूज़ करना है तो एक आईडीई लगती है, जिसपे हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं. और पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, इफ़ यू वांट कि अच्छा सा वीडियो मैं इसमें बनाऊँ कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, तो उस पे बना सकता हूँ. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज़ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाउ टू इंस्टॉल अ पाइथन. तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए जब पाइथन जिस डालना है आपको, और ये आपको python.org आ जाएगा. डाउनलोड करना है यहाँ पे, जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन आपका डाउनलोड हो जाएगा. एंड यू जस्ट नीड वन आईडी जहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे कि वीएस कोड है, आइटम है, देन पाइचार्म है, देन जुपिटर नोटबुक, ऑल गूगल कोलैब है. ये सब एक आईडी के फॉर्म में काम करता है. पाइथन को आप इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. यू हैव डॉक्यूमेंट्स हियर कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है. तो आपको कम्युनिटी मिल जाएगी. यू कैन लॉग इन इनटू कम्युनिटी. आप वहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप पूछ सकते हो. So lots of things are there, but this is how you install the Python in your laptop. Once you done that, just अभी हम ज़्यादा मूव करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, इंस्टॉलेशन ऑफ Django इन आवर पाइथन प्लेटफॉर्म. तो कैसे करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जहाँ पे भी फोल्डर है, आप जहाँ पे भी फोल्डर क्रिएट करने चाहते हो, या जहाँ पे भी आप Django इंस्टॉल करने जाते हो, तो आपको एक, अभी जैसे कि ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, जस्ट आई ओपन अ कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, जहाँ पे मैं
अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो mkdir मेक डायरेक्टरी बोल के मैंने एक काम कर लिया और इसमें मैंने फ़ोल्डर का नाम दे दिया Django Django फर्स्ट क्लास बोल देंगे इसको। एक्चुअली ये सेकंड क्लास है बट इसको फर्स्ट क्लास एज़ अ फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। यू कैन सी इट इज़ क्रिएटेड। नाउ मुझे एक्चुअली ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है बट ठीक है। Django फर्स्ट, ये सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है, तो हम डायरेक्टरी चेंज करते हैं और हम हमारी डायरेक्टरी पे गए। तो यू कैन सी मैं डाउनलोड्स में था, डाउनलोड में से मैं कहाँ पे गया हूँ, डी जैंगो फर्स्ट क्लास, तो उस फोल्डर पे मैं आ चुका हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे करना क्या है, इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है, अभी आप बोलोगे कि मेरा पाइथन कौन सा इंस्टॉल है, तो यू कैन चेक योर पाइथन वर्जन ऑल्सो। पाइथन डालना है आपको यहाँ पे, पाइथन राइट करके हाइफन हाइफन वर्जन डाल दिया आपने, तो यू विल गेट कि आप देख सकते हो मेरा पाइथन वर्जन है जो लेटेस्ट 3.9.13, और यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो कि ये 12 पे चल रहा है। तो आप इसको अब अपडेट भी कर सकते हो। तो अपग्रेड कैसे करना है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यही कम हम इस पे ही काम करेंगे। ओके, वंस यू कंप्लीट कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल है, आपको पता चल गया है, तो आपको आपके पास इंस्टॉल पिप इंस्टॉल डी जैंगो लिखना है आपको और देखना है कि इंस्टॉल है या नहीं है। इंस्टॉल है तो वहाँ पे आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड डी जैंगो इन योर, ऐसे ऐसे जगह पे इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो ये पता चलने के बाद अभी हमें पता चल गया है कि वी हैव आवर डी जैंगो विथ अस। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है, आपके इसमें नहीं होगा तो ये इंस्टॉलेशन के लिए पहले जाएगा डिजाइंगो, ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा सब। ओके, सो आई गो बैक टू द ये स्लाइड पे आऊँगा। अभी हमारा सेकेंड टॉपिक है, हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है बट वी हैव नॉट क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन अब तक नहीं किया है। वी हैव जस्ट इंस्टॉल आवर लाइब्रेरी इन आवर IDE। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज Django, Django, sorry, my writing, Django project, Django project versus Django application, Django application। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Django project एंड Django application, एग्जैक्टली क्या होता है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Django project is a collection of application, ढेर सारे एप्लीकेशन है उनका कलेक्शन, मतलब एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। एंड द कॉन्फ़िगरेशन, उसके कॉन्फ़िगरेशन और एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज अ प्रोजेक्ट व्हिच इज फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन। तो अभी किसी का वेब एप्लीकेशन है, जैसे कि आपने कोटक बैंक का एक एप्लीकेशन देख लिया, कोटक बैंक के साइट पे चले गए, तो यू कैन सी कोटक बैंक का जो एप्लीकेशन है या जो साइट है वो कैसे क्रिएट किया गया है कि वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएशन का एक टैब है। देन दिस इज वन एप्लीकेशन कि आप वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म पे आप फिल करोगे तो यू कैन क्रिएट योर अकाउंट इन कोटक बैंक और एनी अदर बैंक। सो देन देर इज अ चैटबॉट एट डाउन साइड, वो चैटबॉट पे जाके आप पूछ सकते हो मेरा बैलेंस कितना है या EMI कितना कटा है या वॉट एवर। देर इज अ कार्ड सेक्शन कि वहाँ उस कार्ड सेक्शन में आप देख रहे हो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। देर इज अ लोन सेक्शन। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन है, ऑल दोज आर द एप्लीकेशन। एंड बैंक इज, बैंक साइड जो बैंक है उसका, कोटक का जो बैंक है वो साइड है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक प्रोजेक्ट है। सो एवरी सिंगल, जब एप्लीकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन साथ में आता है तो एक जाके प्रोजेक्ट बनता है। ओके, एंड व्हाट इज द application, a Django application is responsible for to perform a particular task in a entire web application। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास एक पूरा बैंक है और एक बैंक का एक लोन वाला सेक्शन ले, तो लोन वाले सेक्शन का काम क्या है कि होम लोन प्रोवाइड करना है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करना है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करना है, कार लोन प्रोवाइड करना है। बट इट इज ओनली रिलेटेड टू व्हाट, लेंडिंग मनी टू अ कस्टमर, मतलब वो लोन दे रहा है और लोन लोन देने का सेक्शन में लोन ही मिलेगा, आप वहाँ पे जाके अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो वो एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, एक एप्लीकेशन है, स्पेसिफिकली वो टास्क दिया गया है उतना ही काम करेगा। लाइक इतना ही डिफरेंस है डी जैंगो प्रोजेक्ट और डी जैंगो एप्लीकेशन में। ओके,
तो हमने ये पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? हाउ टू क्रिएट अ Django प्रोजेक्ट। हमने इंस्टॉलेशन कर लिया, अभी Django प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। थर्ड टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट अ Django प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट। क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, इट इज अ बिग टास्क, बट विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट अगेन। एंड हम यहाँ पे, तो अभी आप डी जैंगो के साइट पे जाओगे, जैंगो के साइट पे जाओगे तो वो बोलेगा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो यू जस्ट नीड टू राइट, ये कमांड आपको ध्यान रखना है, जैंगो एडमिन, बिकॉज ये एक्सेस सिर्फ एडमिन को होता है स्टार्टिंग में। आफ्टर दैट यू कैन, ये खुद के उस एक एडमिन को प्रायोरिटी होती है तो वो चेंज होता है, बट इट इज एडमिन एडमिन का टास्क होता है ये क्रिएट करना। तो स्टार्ट प्रोजेक्ट बोलना है, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को नाम दे देना है। तो यू जस्ट गिव अ नेम कॉल्ड demo. No, demo is very common. We'll write something else like YouTube, or my engineering, en- sorry, engineer YouTube पर ऐसा डालेंगे हम। यार YouTube भी लिखते, प्रोजेक्ट YouTube लिखते, ओके। ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, उस प्रोजेक्ट पे डालना है, तो चेंज डायरेक्टरी। अब हम YouTube पे जाएंगे, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं वो समझ में आ जाएगा। नाउ यू कैन सी, हम यूट्यूब में चले गए, मतलब एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, वो प्रोजेक्ट में चले गए। तो ये आप अभी इस कोड को देखना चाहते हो तो जस्ट राइट कोड डॉट डॉट। तो आपका ये कोड एक जो आईडी जो यूज करता हूँ वो है मेरा वीएस कोड। तो यू कैन सी, यूट्यूब में जाओगे तो these are the files which come with a Django project, like init.py, ASGI setting.py, then urls.py and wsgi.py and manage.py. These are the files created when you create a project. तो अभी हर एक फाइल का मतलब क्या है वो समझेंगे हम स्टार्टिंग में। तो ये init.py फाइल है, वो एक फाइल मतलब एक ब्लैंक पाइथन स्क्रिप्ट है। It is a blank Python script because it is a special name. Django created this folder as a Python package. जब भी python.py का जो फाइल होता है, it is like a Python package file. Okay, and file in init.file, then only folder to create a Python package. ओके, सो नथिंग बट एक पाइथन पैकेज है जो कि Django में होता है, init डॉट पी वाई। अभी सेटिंग डॉट पी वाई क्या होता है? सेटिंग डॉट पी वाई इज नथिंग बट अ सेटिंग अबाउट प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशंस, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या-क्या आता है? इंस्टॉलेशन एप्लीकेशंस, मिडलवेयर कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आता है। तो इफ यू गो एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे दिया गया है, जो भी हम एप्स क्रिएट करेंगे वो एप्स हम यहाँ पे देंगे। देन वी हैव अ मिडलवेयर, जो मिडलवेयर होते हैं वो यहाँ पे लेंगे। देन वी हैव अ टेम्पलेट एंड यू कैन सी द डेटाबेस आल्सो एंड ऑथराइजेशन एंड ऑल दोस थिंग इज अंडर सेटिंग। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है और जो भी डेटाबेस से रिलेटेड, मिडलवेयर से रिलेटेड, या इंस्टॉलेशन ऐप से रिलेटेड, जो भी टेम्पलेट से रिलेटेड जो भी काम आता है, कॉन्फ़िगरेशन आती है, वो हमारे सेटिंग में होती है। आफ्टर दैट वी हैव यूआरएलएस। तो यूआरएल्स क्या होता है? तो यूआरएल्स नथिंग बट, जो भी हम किसी भी साइट पे जाते हैं या किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो यूआरएल डालना होता है। और यूआरएल डाल के जब हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो उस पे हम पॉइंट आउट होते हैं। तो ऑल यूआरएल आर स्टोर इन द प्रोजेक्ट्स। ओके, यहाँ पे स्टोर होते हैं जो जितने भी यूआरएल से हमारे प्रोजेक्ट्स के, वो इस यूआरएल में स्टोर हो गए। प्रोजेक्ट्स में यानी प्रोजेक्ट के अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला। तो हर एक एप्लीकेशन में जितने भी यूआरएल्स हो गए, दे आर गोइंग टू बी हियर ओनली। ओके, और एवरी व्यू
जो व्यू पेज होता है जो कि हमारे एप्लीकेशन में क्रिएट होता है, तो वी हैव टू डिफाइन अ सेपरेट यूआरएल पैटर्न। और जो एंड यूजर नथिंग बट हम जो यूजर है, वो क्या करता है, यूआरएल पे एक्सेस एक्सेस करने के लिए वहां पे यूआरएल डालता है। जैसे कि youtube.com, मैंने youtube.com डाला तो youtube.com पे ही फेच होगा और वहां पे जाके ही पॉइंट आउट करेगा। देन youtube.com पे कुछ मैंने आगे कुछ कोड है जो कि लिखा है, वो स्पेसिफिक फॉर एक वीडियो के लिए, तो वो उसी पे पॉइंट आउट करेगा। दैट्स द थिंग एक्चुअली, कि यूआरएल मुझे यूट्यूब यूट्यूब पे जाके किसी स्पेसिफिक टास्क पे जाना है, लाइक मेरे प्रोफाइल पे जाना है, तो वो प्रोफाइल का एक अलग यूआरएल क्रिएट होता है। तो जैसे कि एडमिन का यूआरएल है, अकाउंट का यूआरएल है, उसी तरह से उसका भी होगा, तो वहाँ पे वो पॉइंट आउट करेंगे। देन व्हाट वी हैव, वो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है जब हम जैंगो का एप्लीकेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे भी मैं जितने भी यूआरएल्स आएंगे वो ये यूआरएल पैटर्न में मैं नोट डाउन करूंगा, तभी वो एक्सेस हो गया, अदरवाइज नहीं हो गया। देन वी हैव डब्ल्यू एस जी आई। डब्ल्यू एस जी आई मतलब वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। और वी कैन यूज दिस फाइल टू डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन इन अ प्रोडक्शन ऑन ऑनलाइन सर्वर। तो जो भी हमने एप्लीकेशन बनाया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन रेडी कर दिया और अ, एक एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और एक ढेर सारे एप्लीकेशंस है, तो मुझे वो रन करने के लिए, लोकल पे रन करने के लिए ये काम करता है। ये जो फाइल है उसी के लिए काम आती है। तो मैं चेक कर सकता हूँ मेरे प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस करने हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन जाके मैं देख सकता हूँ कि हाँ, ऐसी ऐसी मेरी वेबसाइट दिखती है, ऐसा ऐसा मेरा एपीआई दिखता है। तो दिस इज द फाइल विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। ओके, देन वी हैव अ, दिस इज द फाइल manage.py। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है और इसका काम एक ही है कि जो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से जो है, अभी ये जो है हम कमांड लाइन प्रॉम्प्ट इसका और एप्लीकेशन का फेच करके देना। लाइक द मोस्ट कॉमन यूज पाइथन स्क्रिप्ट इज manage.py, सबसे ज्यादा यूज होता है। इट इज अ command line utility to interact between Django project and various ways, like to run deploy server, run testing and create migrations। तो हम डिप्लॉय करने के लिए भी manage.py फाइल यूज करते हैं। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन Django प्रोजेक्ट एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लाइक हम रन कर सकते हैं, सर्वर रन कर सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं, देन डेटाबेस से फेच कर सकते हैं, सो शेल से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग द manage.py फाइल। नाउ वी हैव लर्न कि हमारे पास जो जो फाइल आई है उसका मीनिंग क्या है, हमने कुछ थोड़े समय में देख लिया है। नाउ व्हाट विल मूव टू, अब हम सर्वर से कनेक्ट करेंगे हमारा जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हमने, यूट्यूब यूट्यूब उसको हम अपने फेच करना चाहेंगे कि इसको मैं ऑनलाइन कैसे लेके जाऊंगा। तो ऑनलाइन लेके जाने के लिए कोई बड़ी काम नहीं करने की जरूरत है। जस्ट यू नीड टू राइट द पाइथन मैनेज manage.py, जो कि मैंने अभी बोला कि हमें फेच करने के लिए क्या लगता है, manage.py। और रन सर्वर बोल के हम एक कमांड है वो डालना है। ये मैं डालने के बाद ये मेरा फेच होना चाहिए। यू कैन सी दिस इज द लोकल आईडी और ये 8000 पोर्ट पे वर्क करता है। सो इफ यू सी, यू कैन सी इट हियर, जैंगो के हम लोकल वेब होस्ट पे आ चुके हैं। द इंस्टॉलेशन वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यू कैन सी दिस इज द लोकल। और अब यहाँ पे मैं एडमिन डालूंगा तो ये एडमिन के इस पे चले जाएगा। यू कैन सी जैंगो एडमिनिस्ट्रेशन, or you can change, you can just give the user id and password and you can log in into that। तो ये भी आगे आगे वाले आने वाले वीडियो में हम देख सकते हैं। बट दिस इज द लोकल होस्ट, यू कैन सी हियर। ओके, नाउ विल गो बैक टू आवर command line prompt and we'll check a different scenario or we learn a different thing। So अगेन अभी हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट को सेंड किया एंड वी ब्राउज एंड सेंड द रिक्वेस्ट ऑन व्हाट पोर्ट, ये लोकल लोकल होस्ट का पोर्ट आईडी है एक्चुअली 127.0.01 एंड 5000 इज लाइक यूज फॉर फ्लास्क और 8000 यूज होता है ये जैंगो के लिए।
तो हर एक के लिए पोर्ट ये डिफाइन होता है, डिफॉल्ट पोर्ट है। वी कैन चेंज द पोर्ट ऑल्सो। इफ यू वांट टू चेंज अ पोर्ट, व्हाट यू कैन डू, you just write the port name here, like I'll just show you, just give me a second, कि हम पोर्ट कैसे चेंज करते हैं। देयर इज अ वन वन वे वी कैन चेंज द पोर्ट। you just need to write like I want to change the port to a 7000 here. So I'll just write the 7000 and maybe it will, so you can see we change the port. Now it is run on, not on 1000. If I try to fetch this, it may not work. Okay, you can see this site cannot be reachable. But if you see, this is reachable because it is now port, we are using the 7000 port. Okay, so we have just changed the port just by using, we just type here 7000 and we if it is in use in your local host, then it will not be used the same port. You need to check it if it is working, it is used or not. So the 7000 was not used, that's why it is working. Okay, so what we're gonna do, we're gonna create our first project now here. So to create a project, we have the same thing like python python dot manage dot py. Then we write app start app, and we give the app name. So project name was YouTube, and I'll write the app name is engineer. Okay, and you can see I have created my app over here. You can go here and you can check. This is engineer is a my application I have created. Now you can see here the migration is one of the folder. Then we have a files like init.py, admin.py, app.py, model.py, test.py, and application.py. So इसमें से these two, model.py and views.py, is very uh, use files when we work with Django. Okay, so what we have created now, once we have created our project, we need to follow some things, like we need to check कि ये चीज़ हमारे एप्लीकेशन में है या नहीं है। बिफोर दैट आपने यहाँ पे देखा होगा एप्लीकेशन कंटेन द सिक्स फाइल। सो इफ यू काउंट दैट 1 2 3 4 5 एंड 6, सो एप्लीकेशन में सिक्स फाइल कंटेन करते हैं एंड द प्रोजेक्ट कंटेन द फोर फाइल्स। सो दिस इज माई प्रोजेक्ट एंड 1 2 3 4 5, how it is. Okay, this is not the usable file, but these are the four files we have, and one special file is manage.py. It is a special file because it is an it is an bridge between a application and the different command line prompt. Okay, so and this is the db db.sqlite. It is a database which is come with Django. So thanks to Django that they have like created such a interface, so we don't need to install third party apps or any third party database to connect with Django. We have a built-in database over there. So if you see, this is the file we have. Like init file, we know what is init file. It is a blank Python scripted file. It is a package of Python files. Then we have a admin.py file. It is nothing but we register our model in this file. We register our model. So if I go inside, you can see there is nothing, but we what we do, whenever we create a model, so models कहाँ पे create होते हैं, here in model.py। जो भी मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना पड़ता है, एडमिन डॉट पी वाई में। और जैंगो विल यूज दिस मॉडल विथ जैंगो जैंगो एडमिन इंटरफेस। जो एडमिन का इंटरफेस है वहाँ पे वो मॉडल्स रिफ्लेक्ट होते हैं। यू कैन सी दैट मॉडल्स इन द admin page also. Okay, after that we have a py apps.py file. So in this file we have specifically application
स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि सेटिंग उसमें था वैसे तरह से ऐप से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है, you can create here the configuration related to application. After that we have a model.py. This file we have to store the application data models. जो भी data models create करते हैं, what is data models? uh, like we are fetching the some information from a front end, तो उसके लिए कुछ मॉडल क्रिएट करना पड़ता है टू गेट इनटू अ बैक एंड। तो यहाँ पे मॉडल क्रिएट करके वी गेट ऑल द डेटा विच इज नीडेड इन द बैक एंड, वो फ्रंट एंड से हम लेते हैं बाय यूजिंग क्रिएटिंग अ मॉडल्स ओवर हियर। ओके, एंड देन वी हैव अ टेस्ट डॉट पी वाई। सो टेस्ट डॉट पी वाई का काम क्या है? we have to specify the test function to test our code, बस टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। then we have a view.py file. As I mentioned before, it is an important file which is very important task to do. So in this file we have to save the function that handle the request and return the responses। जो भी हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जो यूआरएल्स यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन को अभी इसमें दो टाइप की अलग अलग फंक्शनलिटी होती है, एक फंक्शन बेस्ड और एक क्लास बेस्ड व्यूज हम क्रिएट करते हैं। सो वी आर गोना सी बोथ ऑफ देम in upcoming video, but in this video maybe we'll try to create a function over here to fetch the data. So if you understand why we create, and if you understand, you may think कि बाबा ये इतना क्यों डिस्कशन करना है, बट इफ यू नो कि इसका काम क्या है, टेस्ट डॉट पी वाई का काम क्या है, व्यू डॉट पी वाई का काम क्या है, तो यू अंडरस्टैंड कि हमने ये क्यों यूज किया है। सो सेव द फंक्शनैलिटी फंक्शन and handle the response and return the responses, handle the request and return the required responses on by using the view page. And then we have a migration का folder है, you can say the directory store the database specific information related to model। जो भी माइग्रेशन में क्या होता है, जितने भी मॉडल्स में हम डेटाबेस रिलेटेड जो टास्क करते हैं तो वो माइग्रेशन में जाके स्टोर होते हैं। दैट्स इट। नाउ once we have created the application, we have to do the some task, like these are the these are the application, these are the thing we need to create over here। So we'll go back to our application, and in application you need to go to the setting। यूट्यूब जो प्रोजेक्ट किया है उसके सेटिंग में जाना है, एंड इसके इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल ऐप में आपको यहाँ पे आपका ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे कि इंजीनियर लिखा है यहाँ पे, तो इंजीनियर हम डाल देंगे। यू कैन सी मैंने इंजीनियर एज अ मेरा ऐप इंस्टॉल कर लिया वहाँ पे। ओके, वंस यू कंप्लीटेड यू जस्ट नीड टू सेव दैट। ये एक टास्क आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ सेकंड एक्टिविटी और सेकंड टास्क यू हैव टू क्रिएट इज क्रिएट अ व्यू ऑफ आवर एप्लीकेशन। सो व्यू पेज में जाना है इन योर एप्लीकेशन। यहाँ पे व्यू आ गया एंड यू नीड टू क्रिएट अ व्यू। So Vue is responsible to prepare required response to the end user। जो end user में हम create करने वाले उसका response create करने के लिए Vue हम लगता है। Vue contain the logic, business logic, और business logic में क्या होता है, जिसके फ्रंट एंड पेज दिया गया है, लॉग इन कर सकते हैं, उसमें अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे चैटबॉट है या अदर थिंग्स आर देयर। तो वो क्रिएट करने का काम किसका है? एक व्यू का काम करता है। तो वो व्यू जो दिखता है उसी का काम होता है यहाँ पे व्यू में हम जो लिखा जाता है। सो व्यू हैज अ टू टाइप ऑफ व्यू, वन इज अ फंक्शन बेस्ड व्यू एंड सेकंड इज क्लास बेस्ड व्यू। तो हम इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में दोनों भी देखेंगे, बट इन दिस वीडियो वी आर यूजिंग द फंक्शन बेस्ड व्यू। तो हम व्यू में जाएंगे एंड वी नीड वन थिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम django django dot http import import http response. We need a http response, and once we have taken that, we will create a function. We will create a function called def home, and we will pass request and will return http response as a, we'll just use a string over here, or you can just go to and search for html
हमें एक हेडलाइन चाहिए तो h1 यूज करेंगे और h1 को यूज करने के लिए we'll just copy this function, this line, this sentence, and we'll go back to our application and I'll just put it here. And now you can change the heading here. The heading is uh, welcome, welcome to engineer YouTuber. Okay, and you go home. Now save this, and now what is we have completed the our second activity. So once we created this view page, you can check that. But before checking that, we need to add that URL into our project. So go to the URL. Now here you need to give the path. Path in path you just write home and yes we have. Then we need to get that from what, from Django dot views import all. So you just write all. Once you get the, we have a home and we'll give the name as a, name is equal to home. Okay, maybe this is how we create. Uh, I think I have created it right, but why it is not taking only create किया ना? I'll just go back. I'll just view में जाके देखेंगे. Home it is. Yeah, we need to save maybe. Not save now. Django views. अभी ओके Django से नहीं है हमारा. Engineer. Okay, because the application से लेना है engineer dot views and get all. Now it is done. I think so. We have completed our third activity. We have added our URL into a URL pattern. After that, we'll go back to our uh, command line prompt and we'll try to fetch that data. Let's see. Once it is completed, we just go back to here. You can see it is saying uh, using the URL configuration define dot URL Django is trying to order. Okay, so I'll go back here. I'll check what happened actual. Okay, I got it because we have, like, if you go here and if you render on home, you can see welcome to the engineer YouTuber. So we have done the first task. What what we're trying to do, we have just requested and response. You can see the response. This is the response. But if you go to the front or default page here, you can see there is a there is a error in our page. The reason is because we don't have any path over here. We just create a path. Before creating a path, we need to go back to our page and we'll create a second page called success dev dot success, and I'll again pass a request here. And once we create it, we'll write and render. I'll just pass a request again. Now, what we need to do, we need to create a we need to go to our engineers and we need to create one folder here as a template which store all the images, all the static files over here. So
टेम्पलेट्स लिखना है और स्पेलिंग में गलती से भी गलत मिस्टेक मत करना बिकॉज इफ यू डू द मिस्टेक ओवर हियर इट विल नॉट गिव एयर प्रॉपर एरर और आप बहुत uh, समझेगा नहीं आपको क्या करना है ओके वंस यू क्रिएटेड अ टेम्पलेट जस्ट create a file called index or whatever you want to give the name. I'll just give the index.html and I'll go and create a template. In this template I'll just write here uh, a success as a title and I'll write here something headline will be uh, this is this is this is a, a success story of of engineer YouTuber. Okay, and you- after that we'll create a paragraph of I'll just write past the lorem. It will create a random text over there. Once it is created, you can see we come back to our page and we'll store that, save that in our index page, templates, and we have created the HTML file called index. We'll go back to the our view view page, and I'll just call here the index page. Okay, index.html, and it should be in the format. Okay, once we have created that, we have now go back to our URL. In URL we need to give the here it should be uh, uh, success, I think so. Success was there, yeah. And here name should also be success. Let's see, and we will try save this file and go back to here. Okay, run. Now the template does not exist. You can see this is the error we are getting over here. So we'll go back to the templates, and if you see this is the template. In template we have templates, we have the file called, but if it is not, let's move back to the no, it should be under a but we need, I think I need to create one more, not file, I need to create one more folder called, we'll write home over here, or we can write just home. Yeah, in home we have this file, so it should be out of this. Just now in the home we have this file. Now go back to the view, and I'll just write home slash okay, and let's try again. Hopefully it will run. It's still not running. Why? Okay, I'll just try to. So the problem was in the template actually. I moved the template folder into a project. You need to keep it, that template folder, into your application. So I just move back my template folder back to the application in the application. So my application name is engineer, and I move that folder into a application template. Then I have created another folder where is home, and in home I have index.html, and index I have written the one header, and the header is this is the success, this is a success page of engineer YouTuber,
and I'm going to create one a paragraph called lorem. It is a random text, so I'll just save and I'll go back to the my command line prompt, and I'll try to run on server. So python manage.py, and I'll just go back to the side. If you see, this was the previous side on default. You see, this is a success page of engineer YouTuber, and the lore, and it is a random text you can see. And I have created one more uh, URL display. So this is a welcome to engineer YouTuber. This thing we have already created in you have means we have gone through all of this. You can see here we have like two functions. One is home and another one is display. So yeah, uh, and if you have not liked my not subscribe my channel, so go and subscribe the channel and share with your friend, like comment uh, and hit the bell icon so you never miss the updated video from my channel. And make sure you hit the subscribe button, because when you subscribe my channel, it motivates me. And again, today is the Dasera, so happy Dasera to all my uh, YouTube friends. And you can see here, not subscribe and subscribe, like from last month, like 6,000 people have, or more than 6,000 people watch my videos. And from that, only 3.5 means 3.54% of people only subscribe. So it's not fair, guys. Go and make sure, when you like, if you get 1%, 10%, whatever the percent of amount of knowledge from my videos, make sure you hit the subscribe button. And this is the first video of the Django, introduction of Django. And we have covered from this video, we have covered like these topics, like how to install the Django or Django, then Django project versus Django application, how to create a Django project, then how to run a Django development server, create a first application. That we have covered all these topics in this video. So make sure स्टे ट्यून, एंड आगे वाले आने वाली वीडियो में आप ऐसे ही देखते रहे। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या